Hi everyone. Now today we will start the part 2 of the sound. Okay. So sound is what? It is an energy that creates a sense of hearing. Very good. Now let's do a quick recap. To perceive. Perceive means to receive sound. What we use? Humans use what? Ears. No. Vocal cord is used for propagating. Okay. It can be up. Propagating can be a pair of vocal cords or larynx or voice box. Any term you can use. But ears is ears. That is used for perceiving. In flute, sound is created by the vibration of ear columns. Right. Now we are going to study about the nature of sound. Okay. Okay. So what do you mean by nature, guys? Hmm? What do you mean by nature? Yes, yes, many answer I am getting type. Okay. Let's see. So first, let us understand. Then I will tell what is nature. So we have seen that the sound can travel to gases. Can it travel to liquids and solids as well? Let us find out that. Okay. So for that, what you need? One bell you need, and one tub full of water. Yeah, फिर you can take a bucket also full of water. It should be full of water because we are checking that it is traveling to liquids or not. Okay. So when we will ring the water inside the water, okay. Now make sure that it does not touch the body. It should be inside or a middle. Okay. So that time you will be hearing the bell ringing because sound propagates through water. Because sound is traveling through water. Sound is traveling through the liquid. That's why we can hear too, right? So here we are just ringing the bell inside the water, and from the outside we can hear. Why? Because it is traveling to the liquid, then it is coming to the air. Air can pass. That we have verified in the previous class. But in this class also we are verifying that from the water also it can pass. Now, can it be solid also? Now, many of you have done this in school maybe. In a desk, you have put your head down when you are not feeling well, and you are beating it down. Do it now. If you have a table, put your head down the table and beat with your fingers or your hand from the below down. That time you can hear the sound. Okay, because solid also can travel. Sound can travel through solid also. You can check this. See how this boy is doing. So do put your head like this and on the table at the below. Tell someone to beat. When the below you do. Okay, to understand, clarify. Okay, chalo. Now sound is a mechanical wave which is a medium for propagation. मतलब वो एक वेव है. It is a wave. Medium means anything that has power of transmitting. मीन्स किसी को वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए उसे हम लोग मीडियम बोलते हैं. और एक भी हो सकता है जिसमें मॉलिक्यूल्स हो. इसमें मॉलिक्यूल्स हो. यार में मॉलिक्यूल्स है सर. वाटर में मॉलिक्यूल्स है सर. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स है सर. So these three matters. There are molecules. So sound can travel through them. But अगर हम लोग बोले क्या बोले क्या बोले कि स्पेस में
स्पेस में देयर इज नो गैस और सॉलिड और लिक्विड, नो गैस नो सॉलिड और लिक्विड, देयर इज वैक्यूम, तब क्या ट्रैवल करेगा? यस, इट विल नॉट ट्रैवल in that case. So where there will be, it need a material or medium to travel. Understanding? So इस कोई material है, उसका medium. Material means molecules इसमें होगा, उसके materials. So molecules का medium जब होगा तभी हम लोग sounds को transmit कर सकेंगे. Trans sound is a mechanical wave. Okay. हाँ. So sound can travel like light from sun to earth discovering, right? It has no medium but still it is traveling. That means it is not a mechanical wave, light. But sound, अगर अर्थ में कोई है, if very much loud, thing which is very much loud, and someone in moon, they cannot hear it. Why they can't hear? Why they can't hear? Because there is no medium. How they can be here? It is vacuum, full vacuum. Vacuum means empty space, guys. Vacuum means empty space. Okay. Understood क्या बोला हमने? I guess you can understand. So medium देखिए is a substance or matter. Matter three, but in the higher class you will learn four matters actually: solid, liquid, gas, and plasma. Let this plasma be a mystery for you now, because I will not explain in this chapter. Think there are three matters. Okay, but fourth matter is also there, that is plasma, that is mystery for you. So you can find out now only, or in the higher class you will be able to find out. Okay, no worry. So medium is a substance or matter, any of these four, which a sound wave can propagate in form of disturbance. So मैंने बोला ना कि वो shake कर देगा molecules को, it will vibrate the molecules. That time it will create a disturbance in the matter. That time it can propagate. So without creating a disturbance, it cannot propagate. Okay. जब वेव जा रहा है तो एक एयर मॉलिक्यूल्स को भी ऐसे वेव पे पैटर्न्स में वो डिस्टर्ब करेगा, मूव करेगा, वाइब्रेट कर देगा, तब साउंड प्रोपागेट हो सकता है. कब हो सकता है? मीडियम होगा, कि मीडियम में ही तो मॉलिक्यूल्स है. मॉलिक्यूल्स के बिना कौन डिस्टर्ब होगा, कौन मूव करेगा? इसलिए वो मटेरियल मीडियम इज नीडेड, बिकॉज वो डिस्टर्बेंस के फॉर्म में प्रोपागेट होता है. Very important, these two things, learn it very carefully. Okay, chalo. Okay, wait. Right. Now, sorry. Okay, now we have learned that the molecular structure of states of matter, the propagation of mechanical waves depend on the molecular packaging. So देखिए, सॉलिड का मॉलिक्यूलर पैकेजिंग कैसा होता है? टाइटली पैक्ड. ये अगर सॉलिड है, ये सॉलिड है. लिक्विड का कैसा होगा? लूजली, कंपेयर टू द सॉलिड्स, लूजली पैक्ड. और गैसेस का मोर लूजली पैक्ड. ओके, मीन्स लूजेस्ट गैस. सो जिसमें क्लोजेस्टली पैक्ड होगा उसका वाइब्रेशन कैन पास क्विकली. लिक्विड्स का पास स्लोअर देन सॉलिड्स, और गैसेस टेक मैक्सिमम टाइम टू पास.
रिमेंबर दिस, जिसका ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा वो उतना कम टाइम लेगा. सॉलिड विल टेक लेस टाइम, लिक्विड विल टेक, सॉरी, solid will take very less time, yes. Liquid will take more time than solid. The gases will take the maximum time. Okay, so the propagation will depend on the packaging of the material. So tightly packed is inversely to the propagation. और आप टाइटली पैक्ड बढ़ेगा तो प्रोपोगेशन जल्दी होगा. रेट ऑफ प्रोपोगेशन आप कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड, वेरी क्लियर. इस फॉर्मूला के साथ अपने कॉपी में रिप्रेजेंट कर लो, बहुत इजी होगा. ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर द स्पीड ऑफ साउंड वेराइज. तो the speed of sound will vary, it will varies, okay, with the change of the nature of media. अगर solid में होगा तो speed will be maximum, less time लेगा, right? So speed of sound in iron at 20 degrees Celsius is 6000 meter per second. This is a verified thing I have got from Google. Speed of sound is intermediate 1500 मीटर पर सेकेंड में वाटर का साउंड 20 डिग्री सेल्सियस में, और गैसेस का 340 मीटर पर सेकेंड के 20 डिग्री का साउंड. ज्यादा साउंड नहीं है. एंड इफ यू हियर this sound you can hear, but I am doing same thing with the ear also. Ear sound you can hear, please tell me, you can hear? No, why? Because that is not exactly black. Simple. Understood? Got it, got it, got it. I want a thumbs up from your side. यार में जब स्ट्रॉन्ग होगा तब आप हियर कर सकते हो, राइट? यस, दैट इज द थिंग, बिकॉज स्पीड इज सच टाइम हाई. नाउ तो स्पीड बहुत लो है. यहाँ पर मेरा फैन ऑफ है, एक फैन और एक फैन ही ऑन है, तो ये बहुत स्पीड लो है. ओके, दैट टाइम यू कांट हियर ओनली, बट सॉलिड करो या हियर कर सकते. अगर आप टब में वाटर है उसको मूव करोगे तब वाटर का आवाज आएगा, पर एयर का सबसे लीस्ट आवाज आएगा. करेक्ट? अंडरस्टैंड नाउ? आई हैव गिवन यू प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट? So tightly packed is inversely proportional to the rate of propagation of sound. Very important formula. So if we are in the outer space, can we hear the sound of vibration? No, because there is no medium or particles. वाइब्रेशन किस में होगा? पार्टिकल्स में होगा. पार्टिकल्स ही नहीं है तो वाइब्रेशन किस में होगा? तो प्रोपोगेशन साउंड नहीं होगा, राइट? करेक्ट. अगर किसी के पास एक जार है, that is called as bell jar. So we can connect this to a battery, and we will be seeing that we can hear the sound. But when we will pump the vacuum bar, okay, that time we cannot hear it. When we pump the vacuum bar, that time we cannot hear it. Why? Because there is no medium और नो पार्टिकल्स. पहले क्या हो रहा था देख लीजिए. कनेक्ट कर दिया यहाँ पे बैटरी, वो रिंग कर रहा है, वैक्यूम नहीं है. नाउ व्हेन वी स्टार्ट इवैक्यूएटिंग एयर, मींस उसको बाहर निकाल दे रहे हैं सब एयर को inside a bell jar, you will hear no sound from the vibrating wheel, because but it is vibrating, you can see. Why? Because light can travel in any medium, that's why we can see it, right? But we cannot hear it. Why? Sound does not travel if there is no medium. Correct? ये बोलिए, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर, वाटर और सॉलिड. ए बी सी. होमवर्क 1. चलो जल्दी ही बोल दो, आपका होमवर्क हो जाएगा. एयर, वाटर, सॉलिड. यस, सॉलिड. राइट. नाउ क्विज टाइम. The speed of sound
इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन बी करेक्टली कंपेयर। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि मीडियम लगेगा एक साउंड को ट्रैवल करने के लिए, और एक सीखा क्या, स्पीड के बारे में ऑफ साउंड। ओके, तो द स्पीड ऑफ द साउंड, सॉलिड ज्यादा लिक्विड, यही तो आंसर है। A person pressing his ear on the railway track can hear an approaching train. Why this possible? बहुत दूर एक ट्रेन आ रहा है, उस रेलवे ट्रैक से वो हियर कर सकता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज लार्जर इन मेटल, और आप बोल सकते हो सॉलिड, राइट, सॉलिड सब्सटेंस है। इन अ बेल jar experiments, in the bell jar experiment, after starting the vacuum pump, after starting the vacuum pump gradually become fainter and fainter because the number of air particles in the jar keeps decreasing. That's why वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जा रहा है। तब जैसे जैसे वैक्यूम क्रिएट होगा वैसे वैसे साउंड भी लेस होगा। कि वैक्यूम इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टेल मी, वैक्यूम ज्यादा होगा तो साउंड लेस हो जाएगा। दैट मींस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो चलो, वेरी गुड। सी दिस, as a sun, if there is an explosion in space, no sound will be heard. Why? Homework 2 is why. Okay, just tell me why it can be hard. Your homework. This is true though, I'm telling you it's true. But why? The explosion emits energy in the form of heat and light and not sound. It a false है। Option number C, very easy, but इसका सही reason आप दोगे, correct reason you will give the chat box. Okay, I will get to. Okay, हिंट दे रहा हूँ, ऐसे लिखना कि मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं होगा तो पार्टिकल्स नहीं होगा, इसलिए वहां से डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा, इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। सिंपल। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट्स स्टार्ट। Now we know that the vibrating air particles cause the neighboring particles to vibrate and finally reaches our eyes. See here, ear, sorry. See, ये जो हमारा साउंड जा रहा है ये वाइब्रेट करता करता हमारी ईयर में पहुंच रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी how we perceive the sound or how we get the sound. See, this is our ear. Our ear consists of three sections: the outer ear, middle ear and the inner ear. करेक्ट? ये देखिए यहाँ पर लेवल किया ही हुआ है, मैं फिर से क्यों करूँ। दिस इज द आउटर ईयर, यहाँ टू ईयर अप टू ईयर ड्रम। अब मिडिल ईयर यहाँ से यहाँ तक, जहां से कोक्लिया शुरू हो रहा है वहां से नर्व तक हमारा हो जाएगा इनर। ओके, नाउ हाँ, ये पोजीशन के ऊपर में निर्भर है। देखिए ये आउटर है, आउटर पार्ट है इसलिए ये आउटर इनर, ये मिडिल पार्ट है इसलिए मिडिल इनर, मिडिल ईयर, और ये सबसे अंदर का पार्ट है इसलिए ये इनर ईयर। करेक्ट? सो पिना, this outer part, outer this one that you can see, this one is called as pinna. What? Pinna acts as the receptor and it collects the sound vibration. It, this one, will collect the sound vibration. They enter, now it will collecting and this will sound will enter through the ear canal. Through the ear canal. Okay. Now the vibration struck the eardrum. Eardrum को वो वाइब्रेट कर देगा। सो जो वाइब्रेशन आ रहा था
वो हमारा ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देगा. ओके, बिकॉज इज द स्ट्रेस मेम्ब्रेन. जब कोई वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स में टकराएगा तो वो ही वाइब्रेट करेगा, राइट. एंड दैट्स व्हाई इट विल मेक इट वाइब्रेट. The vibrations from the eardrum reach the middle ear. अब वो middle ear में जाएगा vibrations eardrum का. It contains three bones: hammer, anvil, and stirrup. Very important for short question. Hammer, anvil, and stirrup होता है three bones. इस इमेज में देखेंगे तो समझ में आएगा. ये देखिए, hammer, anvil, and stirrups. Three bones are there. Okay. सो अब वो मिडिल ईयर में जा गया. दे मैग्नीफाई द साउंड वाइब्रेशन. ज्यादा होगा तो, जैसे अगर ज्यादा वाइब्रेशन होगा, बहुत ज्यादा, तो तीन बोन ही वाइब्रेट करेगा. अगर थोड़ा लिटिल लिटिल साउंड है तो लिटिल लिटिल साउंड के जगह में क्या होगा, सिर्फ एक बोन वाइब्रेट करेगा. तो वो मैग्नीफाई करेगा कि कितना जोर से साउंड वाइब्रेट हो रहा है, यही मैग्नीफाई करेगा. अंडरस्टूड. दिस वाइब्रेशन विल बी ट्रांसफर इनटू द कोक्लिया. दिस वन, cochlea. Okay, it's the inner part. The cochlea is filled with a fluid that transmit the vibration. That will transmit the vibration to the auditory nerves. Auditory nerves में ये सेंड कर देगा, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पर sensation will go to the brain. Sensation will go to the brain. This is how we perceive the sound. So again, let's recap. The sound is entering through the pinna and going inside the ear canal. After there is eardrum that is vibrating due to the vibrating molecules that is coming through that vibration. Okay. After it is going, there are three bones in the middle ear: hammer, anvil, and stirrup that magnify the sound that is coming. And after that, it goes to the inner ear, that is the cochlea, where it is filled with a fluid that you will learn in the higher class. And then it is going to the auditory nerves that is connected to the brain, that helps us to hear the sound, as the electrical signal will pass from the auditory nerve to the brain and we can hear it. So this is how the sound we perceive through a complex machinery and process. Okay, let's see how we summarize. See, outer ear में देखिए, this is the outside part of the ear. It collects sound vibration. Understood? Chalo. External auditory canal. This is a tube that connects the outer to middle ear. Understood? Eardrum. It divides the external and middle ear. These vibrations struck the eardrum and make it vibrate. So vibration aa raha tha already. That will struck the eardrum and make it vibrate. Okay. The middle ear. No need of this. Okay. Oh no. Needed. Sorry. There are three small bones. These bones are malleus, incus, and stapes. These all together are called as oscillus. Mal, you can remember this name also, but try to remember this name. Malleus means hammer, incus means anvil, and stapes means stirrup. They magnify the sound. Then it received by the eustachian tube, and it is given to the cochlea. No need of this. The cochlea has a fluid which transmits the vibration. You will transmit through the fluid. Okay, and after transmitting it will be detected by our auditory nerves. It will detected by our auditory nerve that is connected to our brain. So as the electrical signals, it will carry the electrical signals to the brain where the sensation sound can be realized. We can hear the sound. So like this is the summary of the human ear. Okay, tell me this. Maths list. Pina. Pina is what? Collect sound from surrounding. A is this. Okay. Eardrum vibrates by incoming this one. Okay. Ear bones amplify vibration or this one. Cochlea is the change vibration to electrical signals. This one. And eardrum is ear bones is amplify vibration. Okay. Or you can say magnify vibration. Okay. Magnify is more better word.
चलो, quiz time about human ear. चलो, the vibration received by the ear are turned into mechanical, chemical, electrical, by visual signals. Electrical signals, very good. Who carry them? Homework 3. Who carry them? Which nerves? Answer it. So I can give an option. Option 1 is artery, second is optic nerves, and third is auditory nerve. Why should we clean? We should. Why should we not clean our ears with any sharp and pointed object? This is very important. This one, how we can care for our ear. That is the why it may harm the eardrum. Eardrum is a thin stressed membrane. If a pointed surface tear it, then we cannot hear anything. See. Now, human ear converts the sound vibration into electrical signals. Yes, that is the true. Okay, right. Now, vibrations received by the pinna are magnified by the middle ear. हाँ, कौन सा करता है? तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. वेरी गुड, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड. If it was not correct explanation, I will give you homework that one. Vibration received by pinna are magnified by the middle ear, then converted into electrical signals by the inner ear. Yes. Let's see characteristics of a sound wave. Okay. Characteristic of sound wave. Now see. We have learned that sounds travel through a medium of making. Waves possess some specific properties. They are like amplitude, frequency, and wavelength. Let us see with the help of a diagram now. What are the characteristics? See, wavelength का हम लोग कैसे represent करते हैं? Y, ulta Y, T, frequency like this, and amplitude is like this. So these are the characteristic: wavelength, amplitude, time period, and frequency. Okay. Note that the pitch, loudness are the specific qualities of the sound wave, which depends on the characteristic. Let us see. So wavelength. Let's see a distance. So this is the wave I have made, right? Now the distance between any two crest. Crest means this one, or two consecutive troughs. Troughs means this one. Is the so एक thing आप देख लीजिए इसे हम लोग क्या वेट कीजिए सॉरी गाइस जस्ट अ मिनट ओके चलो यहाँ पर ही कर देंगे पर यहाँ पर देखिए ये अगर वेव है so this top portion are called crest and this down portion are called troughs. Understood? देखिए क्रेस्ट और ये ट्राउस ओके इनका डिस्टेंस दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राउस और कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट इसको ही बोलेंगे हम लोग वेवलेट सेम ही होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट is always equal to distance between consecutive troughs of sound wave I am telling okay इसका यूनिट होता है मीटर अंडरस्टूड ये डिस्टेंस इस ये भी हमारा एक वेवलेंथ है वे ऑल द वेवलेंथ विल बी सेम मे बी और नॉट इक्वल आल्सो ओके एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मींस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और कैसे डिस्टरबेंस जितना ज्यादा राइज होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा अगर कोई इतना ज्यादा राइज हो के ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा and as a distance okay between the
side and a mean value. This is the mean one, right? With this mean value, the distance of the magnitude. This is also meter because distance देख रहा है, right? So maximum displacement मीन्स कितना दूर, कितना ज्यादा डिस्टेंस, वही बोला है. Now we understand two things. That is, one is this one. Right. Now, can you tell me what happens when you increase the volume of a TV or music system? You are able to hear more loudly. So, what is loudness? Can anyone tell me how can be loudness determined? It can be determined by the amplitude. Okay, so loudness is the attribute of sound, means একটা quality. It is a quality of sound that determines the magnitude of the auditory sensation. कितना ज्यादा हम लोग सेंसेस सेंस कर सकता है उसका मैग्नीट्यूड, मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स द वैल्यू को सेंस कर सकते हैं. ओके, यस. नाउ देखिए एम्पलीट्यूड कैसे करता है. वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम लेस है. ओके, ये वॉल्यूम इतना है, ये वॉल्यूम इतना है, इतना वॉल्यूम और इतना वॉल्यूम. ओके, नाउ दिस वन विल बी लाइक दिस और दिस वन विल बी लाइक दिस. सो मोर एम्पलीट्यूड मोर लाउडनेस. लाउडनेस क्या होता है, कितना ज्यादा हम लोग सेंस कर पा रहे हैं. ज्यादा सेंस मीन्स ज्यादा लाउड, कम सेंस मीन्स कम कम साउंड, राइट? दैट इज द थिंग. तो यहाँ पर ज्यादा एम्पलीट्यूड है, दैट मीन्स ज्यादा वॉल्यूम है. लेस एम्पलीट्यूड है मतलब लेस वॉल्यूम है. सो amplitude is directly proportional to loudness. So by increasing volume, you actually increase the loudness of the perceived wave. That is the increasing the amplitude. आप जब increase कर रहे हो volume, that actually you are increasing the loudness of the perceived sound wave. That means you are increasing the amplitude of the produced sound wave. Correct? So amplitude means loudness. एक साथ related है. Okay, amplitude and the loudness. इसके बाद और एक टर्म आता है. ओके, ओके, लेट अस टेल दिस. देखिए, to conclude, the amplitude determines the loudness of a sound wave. We can see here, see amplitude. और यहाँ पर देखिए इतना है, तो ये क्या है, इत, इतना 2 मीटर एम्पलीट्यूड आ रहा है. सो ये क्वाइट साउंड है. तो ये अगर आया 10-10 मीटर तो ये लाउड साउंड है. मोर एम्पलीट्यूड मोर loudness. I have told you fast only this. Okay, so देख लिया आपने. स्मॉल एम्पलीट्यूड क्वाइट साउंड, लार्ज एम्पलीट्यूड लाउड साउंड. सिंपल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव इज लार्जर. एम्पलीट्यूड को देख के बोलिए. Obviously this one. Why? Because the amplitude is higher. If the magnitude means the value of amplitude is higher, the value of loudness will be also higher. Okay. Magnitudes, use this term magnitude. It looks very good in your answer sheet, this term. Don't use value. Okay. Value means magnitude, but magnitude will enhance your answer in your copy. Okay. Frequency. ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अभी तक मैंने क्या पढ़ा? एम्पलीट्यूड पढ़ा है, राइट? Now, tell me the frequency. What is frequency? The number of oscillations completed per unit time is called a frequency. इसका यूनिट है hertz. Now tell me, in 1 minute, देखिए, if
A sound wave is like this. This is in 1 minute time. Next one also 1 minute time, like this. So now understand what is frequency by these images. So this 1 minute टाइम में कौन ज्यादा ऑस्किलेशन ऑस्किलेशन कैसे समझ सकते हैं जो नीचे ऊपर में ये एक ऑस्किलेशन है दैट्स व्हाई द वैल्यू इज लाइक दिस राइट सो ये एक ऑस्किलेशन होता है ऊपर से नीचे जाकर फिर से ऊपर ये ऑस्किलेशन होता है राइट ये ऑस्किलेशन होता है ऊपर जाकर नीचे आना ओके दिस ऑस्किलेशन अगर कोई बहुत ज्यादा करे मतलब इस टाइम में ज्यादा ऑस्किलेशन है अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी Oh, why these are going added? If you check this one, that अगर 1 minute में anyone is doing this much, frequency means this period of time में कितना हम लोग oscillation कर रहा है इसका हम लोग frequency बोलेंगे understood एक period of time में in a period of time how much time our thing is oscillating our thing is vibrating that is called a frequency so ये देखिए इतना बार ये वाइब्रेट किया है 1 मिनट में और ये इतना बार 2 बार किया है 1 मिनट में so that is their frequency so 2 बार means 2 hertz okay so frequency कैसे लिखेंगे देखिए इसका wait so when we will put the things 1 minute और 2 means 2 hertz अगर 20 मिनट हुआ 20 मिनट ओके ओके और 2 ऑस्किलेशन तो क्या होगा 1/10 hertz correct now have you noticed that your friends have different voices what causes the difference a violin have different voices the piano has different voice sorry sound the guitar has different sound why this is due to a thing called pitch what it is called pitch okay it is called as pitch now pitch is a quality or shrillness of sound shrillness means पतला है या मोटा है thin or thick sound right okay now pitch of a tone depends on the frequency zyada frequency means high pitch sound girls have a high pitch sound because more frequency they have the more frequency but men have a low pitch sound because they have the low frequency understand see the wavelength and see this wavelength okay now see the frequency in 1 minute this is the frequency and this is see this 1 minute frequency so this का ज्यादा होगा this is the high pitch low pitch में ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है मोर वाइब्रेशन इज देयर में लेस वाइब्रेशन सो दैट इज लो पिच साउंड दैट इज लो मींस गंभीर और मींस क्या बोले श्रिल या मीठी साउंड दैट वी टेल एज थिंग्स ओके सो लो पिच अंडरस्टूड लो लो पिच मींस less frequency or high pitch means high frequency simple ये क्या है बोलिए तो हाई पिच या लो पिच हाई पिच वाई बिकॉज इससे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है इससे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है राइट
राइट और रॉन्ग? इससे तो हाई फ्रीक्वेंसी है इसका, दैट्स व्हाई इट विल बी हाई फ्रीक्वेंसी। और इसका लो है, लो पिच, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी है। ओके, a high frequency like 800 Hz is passive with a high pitch sound, whereas a low frequency is low pitch sound. So pitch is directly proportional to music. Sorry, not music, frequency. Pitch is directly proportional to music. Sorry, pitch is directly proportional to frequency. Okay, frequency high, the pitch will be high. Frequency low, pitch will be low. Okay, right, right. Check this. The value of frequency determines the pitch, high or low. Higher the frequency means higher the pitch of the sound, and low frequency means implies the low pitch. See, एक सेकेंड में इतना हमारा वन टू टू हो रहा है, टू वेव क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है। और ये 1 सेकेंड में 1 2 3 4 5 5 हर्ट्ज क्रिएट हो रहा है। तो ये हाई पिच है ना, और ये लो पिच है ना, क्योंकि क्यों लो पिच है? क्यों लो पिच है? कि लॉन्ग वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ है, मोर फ्रीक्वेंसी है, राइट? अंडरस्टूड? सो मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच? No, more frequency, less frequency means low pitch, and more frequency means high pitch. I hope you understand this part. Let me just zoom here. More frequency, more pitch, less frequency, less pitch. More amplitude, more loud, less amplitude, less loud. See this part. Very important. Chalo. So if the frequency of the vibration is higher, we can say the shrill, high pitch. Frequency ज्यादा होगा तो होगा, ऐसे आपका whistle, whistle will have a high pitch का साउंड होता है, पर ड्रम लो पिच। देखिए, ये लेस फ्रीक्वेंसी है ना, इसलिए लो पिच है, और इसका हाई फ्रीक्वेंसी है इसलिए हाई पिच। देखिए इसका ग्राफ देखिए, a bird makes a high pitch sound whereas a lion makes a high pitch sound. Check. More frequency, less frequency. Check. Right? High pitch means C. Okay, high pitch means high frequency, low pitch means low frequency. Right? So a bird makes a high pitch sound. A bird makes a high pitch sound, right? Because it is a high frequency. And the lion that roars, that is the low frequency. That's why वो उतना गंभीर आवाज निकालता है, घर 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 करके, right? Can you guess whose voice is thriller, men or women? यहाँ से देखा जा रहा है कि women का voice है thriller, और men का होता है low pitch, means गंभीर आवाज होता है, than women, women का high pitch होता है sound. Okay? टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन ऑस्किलेशन। ये वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेंगे वही बोला जाएगा एसआई यूनिट, उसका एसआई यूनिट, सॉरी, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इक्वल टू वेवलेंथ बाय टाइम, आई गेस सो, लाइक दिस द फॉर्मूला वाज देयर। वेट, लेट मी, वेट, सॉरी, टाइम पीरियड इक्वल टू, ऐसे आप टाइम पीरियड इक्वल टू, time period equal to number, total time taken, total time taken by number of oscillation। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कर देते हैं, टाइम मतलब 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ, वन टोटल 16 सेकेंड, 16 by 4
मतलब 4 सेकेंड हमारा एक लेगा. टाइम पीरियड मीन्स वन wave will take how much time, that is the thing, that is the time period. frequency मतलब कितना ज्यादा oscillation और time period मतलब कितना time. understand this. frequency मीन्स कितना ज्यादा oscillation होगा, कितना ज्यादा मूव करेगा, और टाइम मतलब कितना ज्यादा नो कितना समय मूव कर सकता है एक मूव. ऑस्किलेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा. ज्यादा ऑस्किलेशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी. सी एंड पीरियड टाइम विल बी मंथ. आई हैव टोल्ड वन ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितना ऑस्किलेशन होगा. राइट. if time period of wave is 0.4 second, what would the wave produce in 1 second? क्या होगा 0.4 इंटू 60 कर दोगे, ये करोगे क्या? नो. तो 4.4 है एक वेव का. नाउ यहाँ पर देखिए कितना वेव. तो वेव यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर 1 लिख लो. तो 1 इंटू ये करेंगे तो 0.4 होगा. राइट. यहाँ पर देखिए सॉरी 2.5 हुआ. क्यों? देखिए देखिए 0.4 में कितना हो रहा है? 1 हो रहा है. करेक्ट और नॉट? इन 1 सेकेंड में कितना होगा? 0.4 इंटू 0.4 ये होगा. लेट मी सी एंड टेल यू. वेट जस्ट अ मिनट. आई गेस सो. ये देखिए 0.4 में कितना हो रहा है? एक वेव का है. तो अब वेव का हम लोग एक्स पकड़ लेंगे. वेव लेंथ भी एक्स. 1 का एक्स हो रहा है. ओके. 1 सेकेंड ये है. ये 0.4 सेकेंड है. तो 0.4 इंटू wait. Okay guys, there will be no formula for this. I have checked. So how you have to do? How you have to do? By seeing the figure. Check. 1 second. 1 2 ये 0.5. That's why 2.5 होगा answer. So this is the figure oriented based question, not the sum. Okay. That's why we have to not do by solving it. Okay. Now let's go here. Pendulum oscillation. This is very easy. 40 times in 4 सेकेंड. तो टाइम पीरियड क्या होगा? 40/4 10 हर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी हुआ. नंबर ऑफ ऑस्किलेशन बाय टाइम टेकन, ये तो फ्रीक्वेंसी हुआ ना. नाउ टाइम पीरियड क्या होगा? 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड लेगा एक. चलो चलो वेरी गुड क्विज. To increase the stillness, the frequency of vibration should be increased. Right. The time period of simple pendulum is 0.2 seconds. What is the frequency? कोई बता सकता है? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 5 हर्ट्ज. ये देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड. ये लिख दीजिए, ये फॉर्मूला है. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑस्किलेशन बाय टाइम टेकन. ये था टोटल टाइम टेकन. इसका फ्रीक्वेंसी का और भी फॉर्मूला है 1/टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड यहाँ पर 1/0.2 इक्वल टू ये. एफ इक्वल टू क्या होगा? 1.0.2 सॉरी 1/0.2 डेट मीन्स 5 हर्ट्ज हो जाएगा. देखिए इसको इंटू 10 कर देंगे, मतलब 20 हो जाएगा. 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा.
ये होगा क्या? 0.5 होगा, यस, इस टू बी 0.5, क्योंकि व्हाट आई एम टेलिंग, सी दिस, फ्रीक्वेंसी दिया है 1/टाइम पीरियड। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशंस। ओके, देखिए 1/टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है। नाउ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम, दैट मीन्स 1/0.2। नाउ 0.2 को अगर 1 से डिवाइड करना है तो ऊपर में 10 से मल्टीपल करना होगा, राइट? तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 10/2, ओ करेक्ट, 5 हर्ट्ज। वेरी गुड, वेरी गुड, 5 हर्ट्ज, करेक्ट, करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए ये 0.2 है, इस पॉइंट को उठाने के लिए ऊपर में 10 से मल्टीपल करना होगा, ये 25 हो गया, 5 हर्ट्ज आएगा आंसर। सिंपल, राइट? वेरी गुड। चलो, which of the wave represent the same loudness but different pitch? loudness सेम है पर different pitch है। loudness क्या होता है? amplitude, और pitch क्या होता है? frequency। बस इतना ही देंगे। sound will be same, देखिए यहाँ पर देखिए सेम loudness मतलब amplitude, इसका amplitude देखिए 1, ये 1 बॉक्स है, इसका हाफ बॉक्स लिया है, इसका 1 बॉक्स लिया है, इसका 2 बॉक्स लिया है, इसका 2 बॉक्स लिया है, मतलब इस दोनों का सेम है पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो 3 and 4 विद आंसर, करेक्ट। A violin and a flute, when played simultaneously in the same orchestra, produce different sound. Which could be the reason? But pitch is different. That is the reason. Correct. So that's all. That's all. That's all. Let's summarize. Then we will leave. Sound is a type of mechanical wave which require a medium. Slowest sound travel fast in solids and slowest in gases. Sense of hearing is caused by reception of sound wave by our ear. Sound cannot travel in vacuum. Sound wave has a characteristic wavelength, frequency, time period, and velocity. Okay, so just remember the formulas. Time period equal to total time by number of oscillations. Frequency equal to 1 by time period. These two are very important formulas that we are going to remember for this class. Maybe I will do one now, only one things. Let me solve, like, see. Time period is given to you 2 second. Okay, 2 second. Now frequency will be what? You know frequency is 1/2। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, राइट? अगर डिवाइड करोगे 0.05 होगा, तो 0.5 होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? करेक्ट। इस फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड भी मिसिंग हो सकता है, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। ओके, तो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व टू फॉर्मूलाज। आई एम रिपीटिंग अगेन फॉर यू, दैट इज टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम by number of oscillations, or frequency equal to 1 by total time. Done, done. That's all for this class. Sound is completed. Revise this video, very important video. Meet you in the next class. Bye.